I am Nikita, welcomes you to Yama Yoga. So in this video we are going to learn asanas, pranayam and meditation to cure thyroid. अगर आपको diabetes है, so yoga for diabetes is the video. Link in the description. Go and watch yoga for diabetes. So इस वीडियो में हम लोग थायराइड के बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे. So first there is two type of thyroid. One hyperthyroidism, two hypothyroidism. हम लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी की गर्दन सूजी हुई है तो उनको थायराइड है. दिस इज रॉन्ग. थायराइड के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं लाइक एक्सेसिव हेयर फॉल, इंसोम्निया, excessive weight gain, excessive weight loss, puffy eyes, swollen neck, anxiety, weakness, breathlessness, irregular periods, cold, and dry skin. Excessive. Now the question is, what is thyroid? Thyroid होता क्या है? So thyroid is a gland which is located in our neck. हमारी गर्दन में एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है जो T3 और T4 नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है, विच इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉर ह्यूमन बॉडी. और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए T3 एंड T4 हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन थायरॉयडिज्म T3 एंड T4 हार्मोन्स की रिलीज जो है वो कम हो जाती है. ये मैसेज हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है जो TSH नाम के हार्मोन को रिलीज करती है, उसका रिलीज बढ़ जाता है. उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं जिससे हम सिम्टम्स ऑफ थायरॉयडिज्म बोलते हैं. सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट थायराइड जो आपको थायराइड के बारे में पता होना चाहिए. अभी आसन से कैसे थायराइड को क्योर कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम से थायराइड ठीक कर सकते हैं और कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आपको थायराइड रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो लेट्स लर्न आसन फर्स्ट, देन प्राणायाम एंड देन मेडिटेशन. सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड काउ पोजीशन. अभी अभी हमारी बात हुई कि थायराइड ग्लैंड गले में होती है, तो आपको आपके गले को कंप्लीटली स्ट्रेच करना है. फर्स्ट पोजीशन, आपको ब्रीथ इन करते करते ऊपर देखना है, आपके गले को स्ट्रेच होना चाहिए. ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन. Breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out down. ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है कम से कम 5 बार. नेक्स्ट आसन है कोबरा पोजीशन. फॉर दैट ब्रिंग योर बोथ हैंड्स नेक्स्ट टू योर चेस्ट. अभी सांस भरते भरते टेक अ ब्रीथ इन, लिफ्ट योर अपर बॉडी अप, with the normal breathing you can hold this posture as long as you can. Gradually breathe out and down. Rest. नेक्स्ट आसन इज केमल पोस्चर. केमल पोस्चर में आपकी बॉडी की शेप ऊंट की शेप की हो जाती है. आपके इस आसन में भी ध्यान यही रखना है, आपकी गर्दन को मैक्सिमम स्ट्रेच होना चाहिए, आपको गर्दन में खिंचाव महसूस होना चाहिए. सो फर्स्ट आपको घुटनों के बल खड़े होना है, दोनों के पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर. गिव सपोर्ट टू योर बैक. अभी ब्रीथ आउट करते करते डाउन. Hold this posture as much as you can. Breathe in. सांस भरते भरते वापस आना है. Legs together. Sit down and rest for a while. The next आसन is मत्स्यासन. मत्स्यासन में आपकी बॉडी की शेप फिश की शेप की हो जाती है. उसके लिए आपको आपकी कमर को थोड़ी सी लिफ्ट करनी होगी और आपकी गर्दन को लिफ्ट करना होगा. सो फर्स्ट अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर लिफ्ट योर वेस्ट अप.
Gradually put your body back down. Rest in Savasana for a while. हमारा नेक्स्ट आसन है द ब्रीच पोज, सेतु बंधासन, जिसमें आपकी बॉडी की शेप एक ब्रीच की जैसे हो जाती है. सो उसमें बाइंड योर नीज. आपको आपकी गर्दन को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है. आपके दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर होना चाहिए. अभी आपको आपकी नी पकड़नी है. होल्ड योर नीज. नाउ सांस भरते भरते आपको आपकी कमर ऊपर करनी है. टेक अ ब्रीथ इन एंड लिफ्ट इट अप. You can hold this posture as much as you can. Now सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. Breathe out and down. Rest for a while. आसन सीखने के बाद अब हम लोग प्राणायाम सीखेंगे. योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आपको प्राणायाम को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना होता है. सो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम. सेकेंड सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम. ये दोनों प्राणायाम आपकी गर्दन पे काम करते हैं, जिससे आपको थायराइड क्योर करने में, स्पीडीली क्योर करने में बहुत हेल्प. सो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम में आपको साइलेंटली ओम बोलना है. क्लोज योर आइज. 3 fingers on your eyes, 1 on your forehead. आपको आपके थंब से अपना कान बंद करना है. Take a breath in. Start humming. Take more 2 repetitions. Take a breath in. One last time, take a breath in. Sit silently for a while. सेकेंड इज उज्जयी प्राणायाम. उज्जयी प्राणायाम स्पेशली आपकी गर्दन पे वर्क करता है. जब आप सांस लेते हो तो आपको आपकी सांस को गर्दन से घिसना है. हाउ? टेक अ ब्रीथ इन. Breathe out. Again take a breath in. Breathe out. Take a breath in. Breathe out. Sit silently for a while. Let's learn meditation now. आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि इंसान के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जिसको बैलेंस करने से हेल्थ अच्छी रहती है. सो वी विल नॉट गो टू डीप इनटू दिस 7 चक्रास मेडिटेशन इन दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो स्पेशली थायराइड के लिए है, तो हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे. इन दिस वीडियो यू हैव टू मेडिटेट ऑन योर थ्रोट चक्रा, जो आपके गले में चक्रा है, जिसको हम विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं. आपको उसी पे मेडिटेट करना है. बेसिकली करना क्या है, जस्ट सिट एट अ काम प्लेस. बहुत जगह शांत है जहाँ, वहाँ पे आपको बैठना है. फर्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए आपको कंसंट्रेट करना है आपकी ब्रीदिंग पे. आपकी सांस अंदर आ रही है, आपकी सांस बाहर जा रही है, आपका फोकस कम्प्लीटली उस पर होना चाहिए. आसपास क्या हो रहा है उस बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. देन आपको अपनी जो अवेयरनेस है
वो थ्रॉट पे लेके जानी है और आपके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक मैसेज पास करना है कि आई एम ट्राइंग टू क्योर माई थायराइड। ये आसन, ये मेडिटेशन, ये प्राणायाम प्रैक्टिसेस आपको रोज करनी है टू क्योर थायराइड स्पीडीली। If you haven't liked the video, please like the video, please like, share and subscribe. Thank you.